Good morning, everyone, and welcome to this event today. We are privileged to have with us a distinguished expert in the field of insurance who will be sharing with us valuable insights on this important topic. Chinmay Gandhi is a BCom chartered accountant and the fellow of the Insurance Institute of India. He is heading an insurance distribution firm, MPG Enterprises, which has been in operation since 1895. He works with a team of around 20 people where they handle various insurance requirements of the corporate and individual clients. For the individual clients, they service products like health insurance, life insurance, home insurance, pension schemes, accident insurance, and cyber insurance. As you all know, insurance plays a critical role in providing protection and financial security to individuals, businesses, and organizations. And for NGOs like Shamata, insurance can be especially important given the risks and uncertainties that come with working in the social sector. Today's lecture is therefore a great opportunity for us to learn about the various types of insurance, their benefits, and how they can be effectively utilized by NGOs like Shamata. Our expert speaker brings with him a wealth of knowledge and experience in this field, and I'm confident that his insights will be of immense value to all of us. On behalf of Shamata, I would like to extend a warm welcome to our esteemed speaker and express our gratitude for taking the time to share their expertise with us. I would also like to thank all of you for being here today, and I hope that you find this lecture informative and engaging. Thank you. Thanks, Sid. Nice to be here. It's good to be associated with NGOs who are working in the space that I think we all need to devote our time to. So thank you for having me. And I think, Sid, you have my presentation. If you can just share it. Okay, so I share screen. Yeah, I think it'll be better. You're the host also. Otherwise, you'll have to again Yes, give me the rights and all that. I'll share screen. Yeah. Or if you think I can do it, I mean, will I be able to do it? I can do it otherwise. Yeah, you can share screen. I can. Okay. I'm just not able to do this. Yeah. Can you all see it? Yes. Yes, Okay. yes. Yeah. Okay. So today, we are going to be talking about the medical and accident insurance. We are going to focus on that, specifically for the category of people that, we are providing help to. I mean, the sector that we look at, as in your NGO looks at. So, firstly, before we start, first I want to highlight the problem which I think most of us already know. For the extremely lower segment, there are government hospitals which people can go and get treatment for free. Uh, the upper class has got access to the topmost private hospitals and, the best of treatment because they have large insurances or deep pockets to, pay for the hospitalizations. But it is often the middle class or the lower middle class who is probably not very comfortable with government hospitals. They would be looking at private hospitals because they feel, or it is their belief that they will be getting better treatment over there. Having said that, a couple of large hospitalizations can potentially drain out, the entire savings that they made over the years. So, the costs involved with these hospitalizations or is so large that this is really a problem, or this is something on their head which uh, they don't have a clear answer to, or nor do they have adequate protection in most of the times. And the regular insurances that are available are, quite expensive, and uh,
because they are quite expensive. People delay, buying those policies, and they simply don't insure, or they don't do anything about it, and they just wait. Just live in that hope that there's nothing that is going to go wrong. So these are the critical issues that I'm going to be trying to talk about in today's session. So let's go to the solutions. I'm going to be talking about four products that are there. Two are on the government; they are government supported, or government schemes that are there, and two are on the private space. So the first one that is there is the Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Yojana. This is an initiative by the government. Uh, this would provide a 2 lakhs life insurance cover at a cost of 436 rupees per year. This is done through the banks. It's a direct debit from your bank account. You need to give a particular mandate. The age of entry is between 18 and 50. If you have enrolled prior to 50, then the cover will go on till 55. Uh, it is basically a back-end arrangement with LIC of India and also other insurance companies. So the bank is not going to give the claim. If at all there is a claim, it is going to be paid by the insurance company in question. And if person has multiple bank accounts, it can be done only through a single bank account. It cannot be done multiple uh, times. So that is how this product works. There are certain restrictions. If somebody has any major critical illness, they need to give some declaration when they are signing up that they don't have any major critical illness Excuse before me, they are excuse getting me. enrolled. Yeah. Yeah, so on chat, Ms. Jinal said that it would be good if you use Hindi as well. So Okay, it'll okay. be I'm so easier to sorry. Yeah, yeah. understand. I did mention that, and then I just missed doing it. तो पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि जो मध्यम वर्गीय है उनको इंश्योरेंस की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, क्योंकि उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाना बहुत पसंद नहीं है, उनको वहाँ ट्रीटमेंट में कंफर्ट नहीं मिलती है। और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो खर्चा है वो काफी ज्यादा आता है, और उनके पास अगर इंश्योरेंस भी नहीं है तो वो पैसा भर के उनकी जो जीवन की पूरी पूंजी जो उन्होंने जमाई जमाई है, वो पूंजी एक दो हॉस्पिटलाइजेशन में पूरी व्यर्थ हो सकती है। इसके लिए इंश्योरेंस उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो वो नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि काफी जगह वो उनको जो उनका खर्चा है वो खर्चा वो बेयर नहीं कर पाते। मतलब उनका वो उतना देने की क्षमता नहीं है, इतना 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 प्रीमियम देने की क्षमता नहीं है। तो हम ये प्रॉब्लम्स सॉल्व कराने के लिए कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पहला जो प्रोडक्ट हमने बात किया वो है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, जो गवर्नमेंट की स्कीम है। 2 लाख रुपये का लाइफ इंश्योरेंस कवर मिलता है। अगर डेथ होती है बाय एनी मीन्स, मतलब कोई भी वजह से अगर डेथ हो गई, तो 2 लाख रुपया नॉमिनी को दिया जाएगा। ये 18 से 50 साल के बीच में आप ले सकते हैं। डायरेक्ट डेबिट है, बैंक अकाउंट में डायरेक्ट डेबिट हो जाता है। काफी सारे पार्टिसिपेटिंग बैंक्स है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में, और पॉलिसी इशू की जाती है LIC और दूसरे इंश्योरेंस कंपनीज द्वारा। ये पॉलिसीज इशू की जाती है। अगर आपके पास मल्टीपल बहुत सारे बैंक अकाउंट है तो वो आप एक ही बैंक अकाउंट से ये स्कीम ले सकते हैं। और अगर कुछ मेजर बीमारी है तो आपको ये पॉलिसी शायद वो नहीं देंगे। मतलब कुछ डिक्लेरेशंस करने की आवश्यकता होती है जब भी हम पॉलिसी पहली बार ले रहे हैं। दूसरा स्कीम जिसके बारे में बात करना चाह रहा हूँ वो भी गवर्नमेंट की स्कीम है, जिसका नाम है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। जिसका जिसकी कीमत केवल 20 रुपया है सालाना।
जिसमें 2 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है। अगर एक्सीडेंट की वजह से डेथ हो जाती है तो 2 लाख रुपए की पूंजी फैमिली को, नॉमिनी को मिलेगी। और अगर डिसेबिलिटी हो गया, मतलब अगर यू नो हाथ पैर कुछ भी परवश हो गए, लॉस ऑफ एक आंख हो गया, एक परमानेंट डिसेबिलिटी जैसा हो गया, तो 1 लाख रुपया एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी पे मिलता है। इसका इन ये चीज का एज लिमिट है 18 to 70 ईयर्स, मतलब आप 18 साल में ये स्कीम में जुड़ सकते हैं, 70 साल तक ये स्कीम में आप रह सकते हैं। इसमें भी डायरेक्ट डेबिट है बैंक अकाउंट के थ्रू, और आप एक ही पॉलिसी ले सकते हैं। अगर आपके पास मल्टीपल बैंक अकाउंट्स है तो आप एक ही पॉलिसी ले सकते हैं। तो ये 2 स्कीम्स है गवर्नमेंट की जो मैंने चुनी है। अ, इसका दो उसके 2 कारण है। इसकी जो कीमत है वो बहुत ही कम है, 436 रुपया सालाना, और दूसरा है वो 20 रुपया सालाना। ये शायद हर एक आदमी अफोर्ड कर सकता है। और हमको ये चीज ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाना चाहिए कि आप आपके बैंक पे जाके ये चीज का इस पे सब्सक्राइब आप कर दीजिए, तो आपको 2 लाख रुपए का कवर आपका शुरू हो जाएगा। सो ये 2 स्कीम गवर्नमेंट सपोर्टेड ये स्कीम्स है। अभी इसके बाद मैं एक स्कीम की बात करना चाहूंगा जो गवर्नमेंट सपोर्टेड नहीं है। इट इज रन बाय इंश्योरेंस कंपनीज ओनली। दिस इज नाउ ऑन द मेडिक्लेम। पहले जो मैंने बात की वो एक लाइफ इंश्योरेंस थी 2 लाख रुपए के लिए। दूसरी थी, वो भी एक्सीडेंटल डेथ और डिसेबिलिटी के रिलेशन में थी। अभी जो मैं बात करना चाहता हूँ वो मेडिक्लेम के बारे में बात करना चाहता हूँ। मेडिक्लेम मेडिकल इंश्योरेंस, प्राइवेट मेडिकल इंश्योरेंस या गवर्नमेंट स्कीम्स जो मेडिकल इंश्योरेंस की चलती है वो काफी महंगी है। प्राइस इसका काफी ज्यादा है फॉर लॉट ऑफ पीपल टू अफोर्ड। मतलब जो कम सैलरी के साथ है या जिनकी इनकम इतनी ज्यादा नहीं है, वो ये सब स्कीम्स काफी सारे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। सो इसके लिए आईआरडीए ने एक मैंडेट निकाला है, एंड दे हैव आस्क्ड most of the insurance companies to come up with a particular product called Arogya Sanjeevani Medical Insurance Policy. This is a medical insurance policy जो जिसके टर्म्स कंडीशंस आईआरडीए ने सेट किए हुए हैं। मतलब दे हैव क्लियरली टोल्ड के हम आपको ये स्कीम में यही टर्म्स कंडीशंस रहेंगी, आप वो स्कीम के टर्म्स कंडीशंस चेंज नहीं कर सकते। आप को यही पॉलिसी टर्म्स कंडीशंस पे आपको ये पॉलिसी बेचनी है। हर एक कंपनी अपने टर्म्स कंडीशन अपने प्रीमियम सेट कर सकते हैं। प्रीमियम का कोई बंदिश नहीं है कि यही प्रीमियम चार्ज करना है। प्रीमियम्स ओपन है, तो कोई भी कंपनी अपने हिसाब से प्रीमियम सेट कर सकती है। पर उसमें डिफरेंस ऐसा है कि उसमें कोई कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। तो रूम के लिए उनके रिस्ट्रिक्शंस है कि हम 5,000 रुपीज से ज्यादा का रूम हम नहीं देंगे। उसमें जो बोनस वगैरह आता है, हर एक मेडिक्लेम में काफी सारा बोनस आता है। अगर हम देखें, काफी सारी जो कंपनियां हैं जिनके रेगुलर पॉलिसीज है जिसमें वो लोग ज्यादा ज्यादा बेनिफिट्स देते जाते हैं, पर साथ में उनका कॉस्ट भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से मिडिल क्लास उनको अफोर्ड नहीं कर पाता जैसे उनका एज बढ़े। तो इसके कारण से ये जो टर्म्स कंडीशंस है उसको उनको मॉडेस्ट रखा गया है। कुछ कुछ उसमें रिस्ट्रिक्शंस डाले गए हैं जिसके वजह से इसका यूटिलिटी और जो 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 यूज है या क्लेम्स है, इनके क्लेम्स डेफिनेटली ये पॉलिसीज में कम आएंगे। और बिकॉज ये पॉलिसी में क्लेम्स कम आएंगे, इसकी वजह से इनका प्रीमियम्स अभी भी कम है। और आगे चल के भी ये उम्मीद है, और आईआरडीए को भी ये उम्मीद है कि इनके प्रीमियम्स बाकी पॉलिसीज से काफी रीजनेबल रहेंगे। तो ये पर्टिकुलरली मध्यम वर्गीय के लिए बहुत ही खूबसूरत अपॉर्चुनिटी है कि आप इंश्योरेंस कवरेज भी ले सकते हैं, और साथ में आपका कॉस्ट
भी थोड़ा रीजनेबल रहने की सबसे ज्यादा उम्मीद है। तो ये एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, ये काफी सारी इंश्योरेंस कंपनीज बेचती हैं। जो प्रोडक्ट का नाम है वो कंपलसरी यही प्रोडक्ट नाम रहना चाहिए, वो लोग उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। और मैं दोबारा बताऊं तो वो लोग उसमें कवरेजेस में भी चेंजेस नहीं कर सकते। तो उनको प्रीमियम बढ़ाने के लिए बोले कि भाई हम इसमें ये चेंजेस कर देंगे, ये कवरेज बढ़ा देंगे, तो उन्होंने उसकी सख्त मनाही है। आप इसमें कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकते प्रोडक्ट में, आपको यही प्रोडक्ट रखना है। और इसके वजह से इसका कॉस्ट रीजनेबल रहने की काफी ज्यादा उम्मीद है। लास्टली मैं बात करना चाहता हूँ एक पॉलिसी की जिसका नाम है पर्सनल एक्सीडेंट कवर। अभी ये कोई स्पेशल प्रोडक्ट नहीं है। ये प्रोडक्ट काफी सालों से है इंडियन मार्केट में। अनफॉर्चुनेटली काफी लोग लेते नहीं है, काफी लोगों के को ये प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं है। ये प्रोडक्ट बेसिकली एक्सीडेंटल डेथ, एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी, डिपेंडिंग हम क्या उसमें फीचर्स लेते हैं तो हम उनको उसमें लॉस ऑफ इनकम भी दे सकते हैं कि भाई अगर गिर गए, कुछ एक्सीडेंट हो गया और काम पे नहीं जा पाए, तो उनका जो सैलरी है वो सैलरी का अमाउंट उनको इंश्योरेंस कंपनी देगा विद अ पर्टिकुलर लिमिट। मतलब इट्स नॉट के भाई ज्यादा लिमिट तक, बट पर्टिकुलर लिमिट के हिसाब से दैट ऑल्सो इंश्योरेंस कंपनी कवर्स। कंसिडरिंग के जो पॉपुलेशन में या जो सेगमेंट में हम लोग बात कर रहे हैं, तो उनकी नई नई इनकम्स है, इतना उनके पास कैपिटल नहीं है। अगर कुछ हो जाए और अनफॉर्चुनेट अनटाइमली डेथ के वजह से अगर उनकी इनकम्स बंद हो जाए, तो उनके पास इतना कुछ बैकअप नहीं है कि ये चीज को वो अब्जॉर्ब कर सके। और उनके जो खर्चे हैं, बच्चों का एजुकेशन बोलिए या रहने का खर्चा, खाने पीने का खर्चा, तो वो लोग उठा पाएंगे कि नहीं, वो एक समस्या है। तो वो चीज को कवर करने के लिए ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जो काफी लो कॉस्ट है। और इट कैन बी अफोर्डेड बाय मोस्ट पीपल। लाइक जस्ट अगर मैं आपको बताऊं तो अगर 25 1 लाख रुपए का कवर लेते हैं तो प्रीमियम्स, ईयरली प्रीमियम्स आर अराउंड 3,000 रुपीज पर एनम। सो मोस्ट पीपल ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो अफोर्ड कर पाएंगे। वो प्राइस रेंज में ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट है। और ये ऐसा चीज है जो लोगों को हमको बताना चाहिए कि ऐसा कुछ प्रोडक्ट मिलता है मार्केट में जो वो खरीद सकते हैं। सो आई ट्राइड टू कीप इट शॉर्ट। मैंने जानबूझ के स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के बारे में ही बात की है, सो वी हैव इनफ टाइम के हम क्वेश्चंस ले सके। और आई एम श्योर के काफी लोगों को काफी कुछ नॉलेज ऑलरेडी होगा इंश्योरेंस के बारे में। सो आई थॉट वी कैन स्पेंड मोर टाइम इन क्वेश्चंस। और आप लोग यू कैन आस्क any questions that you have in your mind, and maybe I can give you the real practical solutions to those issues. So, Sid, over to you. Uh, how would you like to go about on the question answers? So I have three questions. So मैं पहले मेरे तीन सवाल प्रश्न पूछ लूंगा और उसके बाद आप एक एक करके पूछ सकते हो। So first question. So what are some misconceptions about insurance, and how do these misconceptions impact people's decision about purchasing the insurance? So misconceptions, गलतफहमियां तो बहुत है। इंश्योरेंस तो कागज है, हम देख के नहीं लेते हैं। अगर टीवी खरीदना हो, कुछ भी खरीदना हो, तो ऐसा है कि वो हाथ में हम ले सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं और फिर खरीदते हैं। तो कोई भी चीज जो हमें देख के लेनी नहीं है, हम तो पेपर खरीद रहे हैं। तो गलतफहमियां तो बहुत है। हम मेजर गलतफहमियां की बात करने जाएं तो मेजर गलतफहमी है कि क्लेम तो मिलता नहीं है, लोगों को पैसा नहीं मिलता है, वो लोगों का सबसे बड़ा भ्रम है। हाँ, यस, प्रॉब्लम्स है, इश्यूज है।
कई केसेस में होते होंगे कि भाई पैसा पेमेंट नहीं होता है। और हम ज्यादातर ऐसा है कि हम ऐसे माहौल में रहते हैं ना जहाँ पे अगर कुछ नहीं हुआ तो उसके लिए तो सब लोग शोर मचाते हैं कि ये नहीं हुआ। तो हमें लगता है कि नहीं, होता ही नहीं है, लोगों को पैसा ही नहीं मिलता है, विच इज फार फ्रॉम द ट्रूथ। आई मीन, अगर हम कोई भी इंश्योरेंस कंपनी के वेबसाइट पे जाए तो हमको पता चलेगा कि हर एक इंश्योरेंस कंपनी अगर 100 रुपया प्रीमियम ले रही है तो आज के डेट में वो 80 रुपया, 85 रुपया, 90 रुपया वो क्लेम्स दे रही है। उसके ऊपर उनके खर्चे हैं। आज एक दो कंपनी छोड़ के कोई भी कंपनी अंडरराइटिंग प्रॉफिट नहीं कर रही है। मतलब जो उनको पैसा मिल रहा है उसके सामने जो क्लेम्स है और उनके जो खर्चे हैं वो काट के बहुत कम कंपनियां प्रॉफिट कर रही है। तो अगर क्लेम्स नहीं मिलता होगा तो प्रॉफिट लोगों का कई गुना प्रॉफिट कमा रहे होंगे, जो इज विच इज एब्सोल्युटली अनट्रू। Another misconception which is there specifically from the health insurance is, I am fit, I am fine, I can, I don't need health insurance. मुझे क्या हुआ है? मेरा मेरा I am absolutely fine. Uh, and I can buy this whenever I want to, which is the biggest misconception, because health insurance is something that if you are falling sick or if you are having a medical problem and then you go and buy, you are not going to be able to get it. So today, if you want to buy a TV, AC, fridge, आप बोलो मुझे लेना है, आज के आज लेना है, तो शाम तक आपके घर में एसी, फ्रिज, टीवी लग सकता है। बट इंश्योरेंस एक ऐसा चीज है जो आप बोलोगे नहीं, मुझे लेना ही है, मैं बहुत डेस्परेट हूँ, मुझे अभी का भी लेना है, मैं कितना भी पैसा देने को तैयार हूँ। तो वो चीज अब ऐसी चीज है जो आप शायद तभी ले पाए या नहीं ले पाए। तो ऐसा सोचना कि नहीं है, अब मैं तो फिट हूँ, मुझे तो कोई मेडिकल इश्यू नहीं है, तो मैं क्यों ये लूं, ये सबसे बड़ी गलती है। या मुझे क्या होगा, वो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है जो हमें दूर करना चाहिए। और स्पेशली इन द लोअर मिडिल क्लास, जहाँ पे income is restricted and there are many things that need urgent attention, तो इसके लिए ये चीज का प्रायोरिटी इसके वजह से कम हो जाता है। भी दूसरा प्रश्न, how can someone determine which type of insurance is best suited for them in their current circumstance? So this is little tricky because फर्स्ट पहले उनको समझना है कि उनकी इनकम्स क्या है, उनके एक्सपेंसेस क्या है, रिस्क्स क्या है जो आप फेस करते हो। अनटाइमली डेथ हो गया, पेंशन पॉलिसीज विल कवर कि भाई अगर यू हैव टू लिव टू लॉन्ग, तो आज आमदनी है, बुढ़ापे में आमदनी नहीं होगी, तो मुझे कुछ पैसा चाहिए जो मेरे घर में आए। रिस्क ऑफ डाइंग टू अर्ली के लिए लाइफ इंश्योरेंस है। रिस्क ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन के लिए मेडिकल इंश्योरेंस है। तो पहले तो रिस्क को डिटरमिन करने हैं और उनको एक अनबायस्ड व्यू में बैठ के देखना है कि चलो मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है और जो क्या चीज है जो मेरे को मेरे फाइनेंशियल गोल से डिरेल कर सकती है, एंड दोज थिंग्स नीड टू बी अटेंडेड टू। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, in corporates, this is a very important mapping that needs to be done, that what are the risks that they are exposed to. In individuals, अगर हम individuals बोले तो फिटेस्ट ऑफ फिटेस्ट पर्सन भी नहीं बोल सकता है कि नहीं मुझे क्या होगा, और कोई भी नहीं बता सकता है नहीं मुझे हॉस्पिटलाइजेशन का जरूरत नहीं है। तो दे द प्रोडक्ट्स दैट आर देयर इन द मार्केट इज समथिंग विच टिपिकली इज अ रिक्वायरमेंट टू एवरीबडी। हाँ, फर्क क्या हो सकता है कि अगर वो मेट्रो में रह रहा है तो उनका जो कवर होगा वो ज्यादा होगा, अगर मेडिकल कवर ज्यादा होगा। अगर वो उनकी इनकम जो है उसके हिसाब से उसके लाइफ इंश्योरेंस का या एक्सीडेंट इंश्योरेंस का कवर होना चाहिए। सो वो डिटरमिन करना है के लिए, उसके लिए काफी सारी वेबसाइट्स है जो ये सब चीज शेयर करती है, आप पढ़ के भी खुद कर सकते हैं। आप कोई एजेंट एडवाइजर के साथ भी मिलके आप वो चीज को डिस्कस करोगे तो आपको वो चीज के सोल्यूशंस कोई भी बता सकता है। पर उसके लिए थोड़ा टाइम स्पेंड करना जरूरी है और समझना जरूरी है कि हम कहाँ हैं, वेयर वी आर इन दिस होल
इन द होल स्ट्रक्चर पहले हमको एक्सेप्ट करना है कि ये जरूरत है। पहले तो हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते, हमको लगता है नहीं मुझे तो ठीक, मैं तो ठीक हूँ, मुझे क्या होना है। मेरा एक क्लाइंट है जो मुंबई मैराथन का विनर है। I had a very tough time, very very tough time to explain him कि इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट है, कुछ भी हो सकता है। And today, unfortunate scenario, and there has been large claims that come. So it is sometimes some things are उनके हाथ में नहीं है। It is not कि हम अच्छा डाइट करें और हम अच्छी एक्सरसाइज करें तो नहीं, हमको हॉस्पिटलाइजेशन नहीं आना है। तो पहले तो वो एक्सेप्ट एक बार कर ले, फिर वो जो बाकी का चीज है वो इतना मुश्किल नहीं है। Or lastly, in the context of NGOs, what are some of the unique risks and challenges that they face, and how can getting insurance help them to avoid those risks? I started off, I told you that, it is a very important thing that is there. It's a very important aspect because जो हम लोगों के साथ डील कर रहे हैं, those are mainly, the middle class. They are not those people for whom, funds is not an issue. In fact, lot of super HNIs, for them, the insurance may or may not be so important. They may be going ahead and taking the insurance, but it is not that, the treatment cost is unaffordable to them, or one hospitalization is going to create a major financial hurdle to them. It is, in fact, these, middle class people who can get most affected because of this. Unfortunately, income is restricted, पर खर्चे काफी ज्यादा है, इन्फ्लेशन काफी है, और वो खर्चे का कॉस्ट दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। तो इनकम एक है, हकदार बहुत सारे हैं। तो उनको कन्विंस करना कि ये चीज में भी आप ध्यान दीजिए, या ये चीज में भी आप थोड़ा पैसा डालिए, या उनको समझाना कि नहीं ये चीज भी महत्वपूर्ण है, और उसके उस वो चीज को भी आपको देख के उसके ऊपर भी आपको चर्चा करना चाहिए या सोचना चाहिए। वो एक सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि उनको ये सब चीज में अभी अट्रैक्शन नहीं है। अगर आप नया मोबाइल बोलो तो वो 15,000 का मोबाइल खरीद लेंगे, पर अगर आप बोलो कि भाई ये इंश्योरेंस आप क्यों नहीं देखते हो, तो नहीं, वो तो अभी मैं फिट हूँ, मैं 2 साल 3 साल के बाद देखूंगा। अभी मेरी सैलरी एक्स है, जब भी मेरी सैलरी बढ़ेगी तभी मैं ये चीज पे ध्यान दे पाऊंगा, अभी तो मुझे ये अनअफोर्डेबल है। प्रॉब्लम है कि सैलरी बढ़ भी जाएगी, पर जो दूसरे खर्चे आप लेके बैठे हैं वो ज्यादा फास्ट बढ़ते हैं, तो ये चीज का प्रायोरिटी फिर आप दे ही नहीं पाते हो। वो एक सबसे बड़ा चैलेंज है। और यस, बेनिफिट तो इज वेरी क्लियर। इफ अगर आप इंश्योरेंस इफ कन्विंस कर पाते हैं, और गॉड फॉरबिड किसी को ऐसा सिचुएशन आ जाता है, यू आर टेकिंग दैट पर्सन बैक, यू आर अवॉइडिंग के वो पर्सन, मतलब इट कुड बी वेरी सिवियर। आई मीन ही कुड लूज हिज लाइफ सेविंग्स, मतलब जो उसने कमाया है वो पूरा लाइफ सेविंग्स उनका लुट सकता है। हम उनको मतलब पूरा डिरेल होने से बचा सकते हैं, फैमिली को डिरेल होने से बचा सकते हैं। तो बेनिफिट्स तो बहुत ज्यादा है। इफ वी आर लुकिंग एट द वेलफेयर ऑफ दोज पीपल, इट इज सो मच नेसेसरी दैट they have some plan in mind. So it is more about feeding it on them at regular intervals, because sometimes एक बार बताने से उनके दिमाग में ये चीज जाए या ना जाए, it is more done when kind of repeated. And lastly, I will say, the bigger challenge also is because there is no active marketing done to those sort of people. So today, because it is, the way these policies are structured, or because they don't expect a lot of money from that segment of people. Uh, uh, even the distribution channels, if you look at the banks, if you look at all the agents, you look at brokers, they are not focusing on that segment of the population. So because of that also, accessibility इतना नहीं है। तो उसकी वजह से एनजीओस का रोल और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उनको शायद कोई मिलने भी नहीं आया है, उनको शायद किसी ने मेडिक्लेम के बारे में समझाया भी नहीं है कि ये पॉलिसी ऐसा मिल सकता है। वेरएज
HNI customers, yeah, the rich customers, anyways, they have got the knowledge through various sources, which जो उनके पास शायद है और शायद नहीं भी है. Okay, so these are all my questions. अभी आप में से किसी को प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं. My question was, can I ask? Yeah, go please ahead. go ahead. Yeah. So my question is that this is the most reasonable insurance you had given us. Is there any other insurance that can be, it can be a private, but it can be affordable for the lower economic people? Yeah, so yeah, is that it? Can I go? Yes, yes. Yeah. So what I told you about Arogya Sanjeevani is IRDA has only mandated that this sort of a product needs to be there. It is marketed by various companies, public sector as well as private companies, which can be looked at. So there are many providers providing this particular insurance. Star Health, Go Digit, Niva Bupa. I mean, there are multiple companies who are in this particular space of providing this cover. And this is completely self-funded. It is not a government-sponsored scheme. And it covers for reasonable amounts, 5 lakhs, 10 lakhs is the cover which can be taken on the Mediclaim front. So on the medical insurance, Arogya Sanjeevani seems to be the cheapest or the most reasonable product. That product is available across various insurance companies. Now, this is what I'm talking to you is only on the Mediclaim side. If one has to look at accident insurance, accident, untimely death, that again, product is available across various insurance companies. And lastly is a term insurance, which is, a life cover, which is also available across various companies that is available. Hope I've answered your question. Is there anything I have not been able to understand? You can ask me again. This Sanjeevani insurance, can it cover the more major illnesses like cancer or other ailments like other illnesses, major illnesses, kidney-related issues? Good, you have raised this question. Mediclaim typically covers all ailments and they have certain exclusions. Those exclusions are very specific that, if person is getting hospitalized due to the effect of alcohol or drugs, or, person is getting admitted only for diagnostic purposes, etc. Cancer would be covered in almost 99% of the policies, or I would say close to 100% of the policies, cancer would get covered. Heart issues would get covered. So policies do cover all major ailments. So barring a few exclusions that are there, which are not disease-wise exclusions. So a lot of hoo-ha happened when COVID happened. COVID is covered. I mean, the policy doesn't name the illnesses. Most policies just cover once you are admitted in the hospital. So they already cover most ailments and most situations, and they definitely cover the major ailments. Okay, thank you. I have also one question. Can I ask? Yeah, sure. Yes. I want to ask, can a person take out a policy if she is or he is HIV positive? Can you ask me HIV positive? I heard. What was the first instance you were telling me? Hello? Hello. Yeah, can you repeat the question? I said, can a person take out a policy if she is or he is HIV positive? Yes, companies have started coming up with unique products where they do cover people with different sorts of ailments. And just very recently, there has been some product which they have launched,
and which is covering people who already have HIV. Now, one needs to understand that these need to be commercially viable policies. So, this is not something which is funded by the government, or it is not being taken as a CSR activity. It is something that the insurance companies it has to make sense, and they have to also earn money at the end of the day after paying the claims. So, if you see the premiums of these particular policies, or if you see the coverages that these policies would give you, they will definitely be, more higher in terms of premium, and there will be definitely, quite a lot of restrictions that will be there as compared to regular policies. But yes, the initiation has started, and I'm sure it will only build on. Typically, insurance works on numbers. So once they have a large set of numbers, it is only about trying to frame a product which will make commercial sense and viability to them. So going forward, we will probably see more and more of such cases. Okay, thank you, sir. Second question is what are the documents required, both policies which you said about that? So typically there would be a form, there would be documents pertaining to the person's health which they need to disclose. There would be KYC documents that would be there. So those are the documents required to start with any policy. Different policies may have different conditions of doing a medical checkup or something of that sort. But I think apart from the KYC, it's basically the medical information that is required. In these government schemes, it is typically even lesser. I mean, they don't really need to know your medical conditions. They don't want to cover somebody who is already on, very critical stage. So they just have a declaration that person is not suffering from A, B, C, D, E, F. I mean, there are very few points that they have put over there. But in the private insurance space, they will definitely want to know what is your medical condition, any previous hospitalizations, etc., etc. So it is mainly the KYC, Aadhaar card, PAN card. It is mainly that, and then it is on the medical declarations. Okay, got it, sir. Thank you. Yeah. Sir, I have question. It's not question. Maybe like no, the implication part I'm asking. The question, two policies that you have like explained, which is really meant by the government. Because we work with the marginalized group, the women from the exploitative situation. So, and these women have started their business. So, we want to help them to start their insurances. So, can we they have their banks accounts in different banks. So, which are banks they should have the accounts to avail the government insurance policies? The banks are various who are, having an association. I think the mandate was to have all the banks covered in this. So what I understand is almost all major public and private sector banks are already a part of this. So if you look at SBI, Central Bank, because they just need to debit the money, and each bank has been given a tie-up with a particular insurance company. So the government schemes, I mean, maybe barring cooperative banks, I do not see the situation that you should have a problem if they are dealing with multiple banks. So Central Bank of India, Union Bank. I mean, most of your major banks have this scheme as a part of their offerings. I mean, it's a government mandate, so I mean they would all be having it. They just need to go to the branch and fill up the declaration and give them the authority to debit that money. I mean, that's all that they need to do. Thank you. So that like sir, to go to their banks and fill up the form and to the money can be debited for their personal insurance purpose, right? Yeah, so they just need to do that, and the amount will get debited, and yeah, that's it. I mean that's all that is required. Okay. Thank you. Sir, my question was when that accident happened or the death happened,
So how the person has to avail this facility, like where he has to go to get that money, or who has Yes. to claim for that person? Yes, yes. So typically when you are enrolled through a bank, each bank has got an association with a corresponding insurance company. So whichever is the insurance company, person needs to go there and give those relevant documentation with relation to the death certificate. If it's a death case, you need to give the death certificate and the government death certificate that is there, any hospitalization related records if the claim, the death has happened in the hospital. Fill up the claim form, give the nominee details, KYC, which is your Aadhaar card, PAN card, etc., cancel check. And I'm made to understand that most of these insurance companies are able to pay out the money in 30 to 45 days. Is the process. You need to go to the corresponding insurance company where that bank is particularly having a tie-up with. Okay, sir. Thank you. Sir, how can we apply online or offline? या It would go bank-wise. I don't think it is there online with any bank. I think you need to go to the branch. You can depending on the bank, you may want to call the call center and check if there is any provision to do it online. But I have not seen it, on the website. I mean, there is no promotion or something of this sort. I mean, these banks are also looking at, their revenue more than other things. So they'll be advertising a lot of their other products, but this is something that they don't really advertise. Okay, sir. Thank you. Any other questions? Hello. I have a question. If someone want to take these policies, government policies, what is the procedure? That means filling that form, where they have to go for this one. Pradhan Mantri Jivan Jyoti Yojana and Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana. These two schemes are here. I like those schemes for the population which I am working with. So what is the procedure? What they have to do if they want to take these policies? I would yes, I want to know the whole procedure, because I have to explain them what is the procedure, where you have to go for this one, and what documents you want. You covered that question, but what is the whole procedure? They simply need to go to their bank branch. I mean, the bank through whom they are banking, they need to go to the primary branch or the resident branch where their account is opened. And they will give a particular form which they are supposed to fill out. And with that, they may ask for the KYC documents. It's basically an authority to debit that particular amount. And once that has been given, I mean, they will get the certificate of insurance. I mean, they will get that confirmation either on mail or hard copy. The process is This is entirely the done at the this bank is branch. I mean, there is no okay. multiple visits, or it's just like an enrollment form or a direct debit form. I mean, that is what Okay. the thing is. Okay, that means this is the easiest process. Yeah, If yeah, absolutely, someone wants absolutely. to fill that form. Yes, Okay. yes, absolutely, Thank, absolutely. thank you so much. Anyone else? Not from my side. So I think we are done with the questions. So, ladies and gentlemen, I hope you found today's lecture on insurance schemes to be informative and insightful. Our expert speaker has shared with us a wealth of knowledge and experience in this field, and I believe that we have all learned a great deal about these types of insurance and how they can be utilized to provide protection and financial security. As we have heard today, insurance plays a crucial role in our lives, whether we are individuals, businesses, or NGOs like Shamata.
By understanding these benefits and limitations, we can make informed decisions about how to protect ourselves and our organizations from risks and uncertainties. So, I want to thank our expert speaker for taking his time out to share his expertise with us. I would also express my gratitude to all of you for attending this session. Your presence here today is a testament of your commitment to learning and growing and to the important work that NGOs are doing to make a difference in our society. Thank you once again for joining us today, and I wish you all the best in your future endeavors.